Okay, so since the last three classes we have been discussing the atomic structure, and particularly now in the last class we have discussed the radial wave function. Radial wave function may be we had further seen the basic features which is there in the radial wave function, and the simplified versions were something like this. So let's just focus on first 2-3 solutions, and then you can set your get the ideas how all others would be like. So पहली चीज जो हमने देखा, all s orbitals have maximum amplitude of the wave at the nucleus. Let's take example of 1s orbital. So this, you can see that whole of this thing is here is summarized as k1s. Then it is left, you are left with this zr by a naught. Okay, so this is the exponential decay profile that we had discussed in the last class. We had also discussed how we can if n is equal to 2, l is 0, it gives you the equation something like this. So the knowledge of two quantum numbers n and l is necessary to describe the radial wave function for a particular orbital. Okay, so इस केस में भी आपको क्लियरली दिख रहा है, एक और चीज दिख रही है कि it starts s orbital when r is 0, it has maximum value, the small r, when you are at the nucleus, the small r is 0. Then this function capital R, which is the radial wave function, it has maximum value, that is, you have maximum amplitude at the nucleus. And when you are moving away from the nucleus slowly, at one point zr by 2a naught, when r increases small r, this will equal to 1, and then whole function goes to 0. So that is the point where node appears. Okay, so if the function is given, you can easily identify where exactly the node will be present. Okay, so this is the advantage sometimes, that you really know where the node is. Similar to p orbitals, here you see what the function looks like. There's so one thing is common, is the exponential term in each of these functions. Okay, then you are seeing that this exponential term is coming out as like e to the power minus zr by n a naught, right? So when n has increased, when you are in the second shell, n is equal to 2, it is zr by 2a naught. तो जो डिके का जो प्रोफाइल था यहाँ पे जितना था, उसका और भी स्लो प्रोफाइल यहाँ पे होगा. इट विल बी चेंजिंग लेस as r increases, small r, the radius increases, you have a very small slow decrease in the amplitude of the wave in this case. Okay, so similarly and that's how we are justified, it is justifiable that we draw smaller circle for 1s, larger circle for 2s. Why? Because it is slowing down, the amplitude is significant even at a distance far away from the nucleus. Okay, whereas this will fall very rapidly. This is much slower change, so the amplitude will be significant even if you move away quite a long distance from the nucleus. तो इस तरह से छोटा सर्कल बड़ा सर्कल जो सर्कल ने स्फीयर बना के हम दिखाते हैं, वो इसीलिए जस्टिफाइबल है 1s 2s 3s जैसे जैसे दिखाते हैं. So that's one point. This equation justifies that thing, the exponential decay part. और exponential decay ये भी ensure करता है कि at infinity all of them become 0. The amplitude, the function goes to 0 at infinity. So that is ensured by this function, which in quantum mechanical postulates you have seen, we have to there are certain boundary conditions which we must satisfy, and that is the role. This
particular exponential term is playing here. ठीक है. So these are the form of, so you are looking at the form of the equations that is looking very different. Now in case of p orbital, when this radius is 0, you are at the nucleus, the whole function goes to 0. So you have 0 amplitude at the nucleus. 1s 2s में क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था न्यूक्लियस पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहीं पे आएगा 1s 2s, बट 2p में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट द न्यूक्लियस, 0 amplitude, so 0 electron density at the nucleus when the radius is 0, radial distance is 0. So now you have to familiarize yourself with the functions, the wave function and their this so see आपसे उम्मीद यही की जा रही है कि आप अगर ये समझ लें तो you can predict the wave profile, the radial wave function for any orbital. थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, समझना है. सो एस ऑर्बिटल के केस में हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और इस केस में देयर इज नो नोड, एंड सो यू हैव जस्ट डिकेइंग टू, वी हैव शोन द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड on this side, positive sign of the wave function, and then it is decaying to 0 at infinity. Second, it was 2s. So this was 2s. This also we discussed in the last class. Starts with maximum at the nucleus, and then so maximum amplitude of the wave, square of the wave, 0.8 का स्क्वायर करोगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी, वो भी मैक्सिमम होगा इसी पॉइंट पे, राइट. बट इस केस में आपने देखा कि एक नोड अपीयर होता है, नोड जो इस फंक्शन से यहाँ पे आता है, दिस इज योर नोड. सो देयर इज वन नोड हियर, and I told you that number of radial nodes is given by n minus l minus 1. This gives you the number of nodes in radial wave function. रेडियल वेव फंक्शन में नंबर ऑफ नोड्स निकालने का, और ये बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए, कभी भी आप नोड्स जान रहे हैं, वेव का प्रोफाइल ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है. कैसे, वो अभी हम 2 मिनट में बताएंगे. ओके, सो हाउ टू प्रेडिक्ट द रेडियल वेव फंक्शंस की कैसा ग्राफ बनेगा, उसको आपको प्रेडिक्ट करना. नेचर ऑफ द कर्व हैज टू बी, you should be able to draw the rough sketch of any radial wave function. How we can do that, we will just see. So again, so s orbital maximum at the nucleus, all s orbitals have this feature. ठीक है, तो पहली चीज ये आप ध्यान रखिए. और दूसरी बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही एट सम पॉइंट व्हेन, यहाँ पे देखिए फंक्शन, व्हेन दिस टर्म you are moving away from the nucleus, r is slowly increasing. At one point zr by 2a0 becomes equal to 1. This is the point. ओके, वहाँ पे फंक्शन 0 हो गया. उसके बाद भी रेडियस अगर इंक्रीज करेगा, आप डिस्टेंस मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, देन दिस होल फंक्शन बिकम्स नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइड में एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन एक्सपोनेंशियल डिके. यहाँ से फिर वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना. तो ये पार्ट आपका एक्सपोनेंशियल डिके वाला पार्ट है, ये जो ऐसे जा रहा है, बिकमिंग 0 एट द इंफिनिटी. So this is your, so how we describe this wave. It has maximum amplitude at the nucleus, the 2s electron wave, and it slowly decays, passes through 0 and becomes negative. So this is positive side, positive sign of the wave function, this is negative sign. सो आप ये समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ द वेव फंक्शन का क्या मतलब है. व्हेन आई से दैट इट हैज अ पॉजिटिव साइन ऑफ द वेव फंक्शन, नेगेटिव साइन, ये समझते हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको रिलेट कर पा रहे हैं. एक मिनट समझिए. व्हाट, व्हेन वी से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, आपने देखा था स्ट्रिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे, और सॉरी,
So you have a string and you plug the string and you get something. So this is your so this upside, you assign this positive sign, this one is negative. This is your reference point 0. Okay, so this, तो sign of the wave function जो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं, we are talking about the amplitude in which direction from the reference point. One side it is taken to be positive, the other side it is taken to be negative. तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एक रेफरेंस लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में जैसे आप जस्ट वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. व्हेन वी से द साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की हम बात कर रहे हैं कि उसका इस डायरेक्शन में कभी था तो उसके अब रिवर्स डायरेक्शन में चला गया है. सो समथिंग लाइक दिस हैपेंस. Okay, so this is the, so we say positive sign, so psi positive, psi negative. So this is the, you have to define the direction. अब इसमें बहुत सारे आप इसमें थॉट इसमें दे सकते हैं कि 2 डायमेंशन में वेव होगा, तो ये मैंने 1 डायमेंशनल वेव का एग्जांपल बताया. स्ट्रिंग में ऐसे हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं. अगर सर्कुलर फ्रेम में वेव है, जैसा कि हमने आपको दिखाया लास्ट 2 क्लासेस में, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उस पर भी थॉट देंगे तो वो भी हो जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट, और यू कैन, we will discuss that also in offline classes. So अभी आप देख रहे हैं, so ये positive से negative sign हो गया. just it is analogous to that situation when we say the sign of wave function has changed from positive to negative and in between somewhere it is 0. this particular point is node. node वो वाला point है जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है और बीच में कहीं पे 0 हो जा रहा है. ठीक है, बाकी कोई भी पॉइंट नोड नहीं कहलाएगा. एंड पे जहाँ पे इंफिनिटी पे 0 हो रहा है वो नोड नहीं कहलाएगा. न्यूक्लियस पे अगर कभी 0 हो रहा है एम्पलीट्यूड, नोड नहीं कहलाएगा. नोड वही पॉइंट है जब प्लस से माइनस में चेंज होते हुए बीच में एक 0 हो रहा है. सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड एंड देन यू हैव in between somewhere it is passes through 0. So there is, so amplitude is 0, square of amplitude gives you electron density. Electron density is 0 there at that point. So in a similar way we talked about 3s. सारे फंक्शंस हमने एक एक करके देखना शुरू किया था, जस्ट फीचर्स एनालाइज किए थे हमने. एंड अगेन 3s, s orbitals, I told you maximum amplitude at the nucleus, maximum amplitude of the wave of electron wave, जो 3 डायमेंशनल वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड न्यूक्लियस पे है. फिर वहां से वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, फिर नोड हियर, then it becomes negative, reaches a maximum, then again starts decreasing, amplitude decreases, passes through 0 and becomes positive again. Positive. So sign of wave function changes, and so you have 2 points, and then after reaching the maximum point on the other side you have drop. आप ध्यान से देखिएगा, पहली बार जो ड्रॉप कर एम्पलीट्यूड जो स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा था, दूसरे साइड जब गया तो एम्पलीट्यूड कम है, मैक्सिमम जो पॉइंट जो नेगेटिव उल्टे साइड में जा रहा है, फिर उसके बाद पार करके जब इधर पॉजिटिव साइड में रहा और भी कम है, मैक्स इधर जो मैक्सिमम आ रहा है. सो ग्रेजुअली द एम्पलीट्यूड घटता जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज इन दिस मैनर, एंड यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल डिके का प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि ये फिर इन्फिनिटी पे इसको ले जाके 0 कर दे. ओके, सो यू हैव 2 नोड्स हियर, nodes and another node here. Amplitude becomes 0, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के प्रोसेस में हो रहा है, and here it is turning from positive to negative and you are getting this thing. So the features are very, now you are seeing a pattern, आपके दिमाग में अब ये बैठ जाएगा. 1s 2s 3s का हमने डिस्कस किया, सब में मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस and then amplitude decreases gradually, and there will be nodes or no nodes, or how many nodes will be there determined by the wave function, the n and l. So that n minus l minus 1 should be that you have to
learned. So that is the number of nodes. So अब क्या ये p orbital. Now we are moving away from s orbitals. So there is a major distinction, a very distinguishing feature of s orbitals that we have discussed. They have all of s orbitals have maximum amplitude at the nucleus. Thereafter p orbital, d orbital, f orbital, कोई भी orbital हो, सबका न्यूक्लियस पे जीरो एम्पलीट्यूड होगा, जीरो. Okay, remember, so this is very important. All other orbitals, p, d or f orbitals, will have zero amplitude at the nucleus when the small r, the radius, the radial distance is 0, the amplitude is 0, and then it will start rising. If you start looking at the actual equation of 2p orbitals, then you can find here that this is in r term is coming as small r, radius term is in here. So when this is 0, whole function goes to 0, right? So that's what happening here. Then it starts rising, reaches a maximum, and decays exponentially. So ये जो है, so exponential decay का feature हमेशा आपको लाना है. So number of nodes you can calculate. N is 2, L is 1, so n minus L minus 1. So you have no nodes are present in this case, no node is there. In case of 3p, this is your 3p orbital, this has one node. Okay, when you calculate this, n minus L minus 1 is 1, so there is one node which is there. And where the node will be, one node is there, and where is the node located, you calculate from this equation. Where is the node, that thing you answer from using this part of the equation. Okay, when zr by 6a0 becomes equal to 1, which is then whole term will be 0. जब zr by 6a0 1 हो गया, उस पर्टिकुलर रेडियस पे whole पूरा का पूरा फंक्शन जो है, entire function will become 0. So that's something, yeah, you can easily see through it. So there will be one node over here. So all of these function 1p, 2p, sorry 2p and 3p, all of them have zero amplitude at the nucleus, start rising towards the positive side, and then start decaying again. So this is the positive negative that you see, that is the oscillatory nature of the wave that we see, increasing and decreasing pattern. Okay, and yeah, so so this is 3D orbital, 3 minus 2 minus 1, number of nodes is 0. So it's a simple, and this small radius, so it has 0 value at here, and then rises to a maximum and then decays exponentially. So by now you have seen the features, and so this is 3D. So we have seen 2p, 3p and 3D, all have zero amplitude at the nucleus. They start from 0, and then they will be rise, and then we'll have further, uh, depending on n and L values, they will have nodes or so if there is node, then you definitely know that sign changes from positive to negative and negative to positive, something like that happens. Okay, if there is no node, then there is no change in the sign of the wave function, it will be just decaying to 0 from one side. So that's how the features are. So what are the
importance, how do you what are the significance of this thing all? Why are we studying this? So when you square the radial part, that gives you radial density function or electron density. It provides you the electron density at that particular point. Electron density is also said to be the probability of finding an electron at a specific point. Remember this specific point at a distance. In another word, the electron density is same thing as the probability of finding an electron at a specific point at a distance r from the nucleus. Now, this is important. Radial probability function is something very different. It is, so you know the electron density, then you multiply with the volume element. We visualize atoms, the electron to be distributed like in form of a onion, concentric shells made up of, जैसे अनियन में concentric shells होते हैं तो पूरा एक spherical shape दिखता है, उसी तरह से we visualize electron to be arranged around the nucleus in concentric shells, and then you integrate this to get the overall probability. Okay, so you have to take the electron density, so basic thing, electron density into volume. Volume of what? This incremental thin shell, very infinitesimally small, so that it has the thickness of dr, right? Very very thin shell, and then you integrate the whole thing, you will get the overall probability. And so this volume is what, if this is the sphere, it is a spherical, so it is, we visualize a spherical shell which are arranged in concentric layer one over the other shells, and then we are trying to find, so probability is finding the probability of finding an electron in this shell. Probability of finding, what is the probability? At a distance r, we have a thin shell of thickness dr, and we are trying to find the probability of electron in this thin shell. So that is given by electron density into volume, and the volume of the thin shell will be 4 pi r square dr, है ना? This is a volume element. You differentiate 4 by 3 pi r cube is the volume of sphere. उसको आप differentiate कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 4 pi r square dr आएगा, है ना? 4 pi r square आएगा, तो उसी के तरह, so volume of this thin shell is 4 pi r square into dr. So what you define, so density into volume, that's, so this is the function that we are, so this is the probability which you, आप जो 11th क्लास में probability पढ़ते थे ना, वो यही वाली probability थी, ठीक है? इंक्रीमेंटल थिन शेल में ही निकालते थे, ठीक है? बीएससी में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, in class 11 in BSc what you have mainly studied is this part. In many books the electron density part is skipped, it is not there, so please, I am as I am saying it more logically, ठीक है? पहले आपने एम्पलीट्यूड को स्क्वायर किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? So this probability is defined like this. So it is composed of two terms. One is electron density, another is the volume of the thin shell that we are visualizing over here. Radial electron density dV. So now you just try to understand one thing. We have just seen the, for 1s orbital. So suppose this is for 1s orbital. We have seen how it is only exponential decay profile. So square of the capital R square will be again have the same profile, exponential decaying, है ना? एक्सपोनेंशियल ब्लू वाली लाइन देखिए, ये एक्सपोनेंशियल डीके प्रोफाइल है, सेम, जस्ट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी स्क्वायर करेंगे तो
So it will have same profile. Now look at the other term 4 pi r square. How it will change? As r small r increases, 4 pi r square ये वाला पैराबोलिकली इंक्रीज करेगा, है ना, पैराबोला की तरह increases in this form, right? So it is initially 0. So what we are seeing here, एक बड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो इफेक्ट होगा वो ऑरेंज वाली लाइन जो है ग्राफिकली मल्टीप्लाई किया गया, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है. So this is what how we are visualizing. You have concentric spherical so we are visualizing electron to be composed of several infinitesimally thin shells, the several concentric shells of very very small thickness, and then we are trying to locate trying to find the probability of electron in that shell. Okay, so first things, square of the amplitude, that gives you this profile for 1s, and then 4 pi r square term, that is parabolically increasing. So when you multiply these two things, you multiply this with this at r is equal to 0, it will come out to be 0 here. ठीक है. सो ये पहला जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसमें क्या है, एट द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, बट द वॉल्यूम टर्म 4 pi r square term is 0. So multiplication shows 0. So the radial probability term is 0 at the nucleus, because not because the electron density is 0, because the volume element is 0. The volume of the thin shell is 0. Okay. Similarly, you can see somewhere at very large distance, again the 4 pi r square term is very large, but the other, the exponential, this electron density is becoming 0 at very large distance from the nucleus, approaching 0. So here again it is 0. Somewhere in between you multiply the two. When the 4 pi r square has finite value, this is also having finite value, you are getting the maximum probability, and this is the same. So that is what we are seeing here. This resultant that we see here is the that thing. So ग्राफिकली देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया गया है. एक आर स्क्वायर का प्लॉट किया गया है, जो कि ब्लू लाइन ऐसे जा रही है, 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये ऑरेंज वाली लाइन से दिखाया गया है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो टर्म है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है जब दोनों का फाइनाइट वैल्यूज है. एंड सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय. ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट, look at this, we are at the nucleus, small r मतलब रेडियस 0 है, we are at the nucleus, हम जब न्यूक्लियस पे हैं, small r is 0. what is this, small r is 0, 4 pi r square, this multiplication term is 0, hence the function is 0. okay, the net function जो 4 pi r square term है, जो ऑरेंज वाली लाइन है, वो 0 है multiplication में. at very large distance from the nucleus, again we are talking about large distance away from the nucleus. so यहाँ पे देखिए इस एरिया में, see where it is flashing. okay, what I want to can I have your attention please. so at this distance, at very large values of this radial distance, the capital R, the wave function approaches 0. The amplitude of the wave dies down, it decreases substantially, it is almost approaching 0. so 4 pi r square term, when you multiply, although this term is very high, it's going on increasing, ये बढ़ता ही जा रहा है. 4 pi r square जो वॉल्यूम टर्म है ये बढ़ता जा रहा है, but it is
0. Somewhere in between we have finite, both have finite values. The small r and the capital R both have finite value. So 4 pi r square, the green one, the blue one, when you multiply the two we get maximum. ये आपका पॉइंट है, रेडियस है, जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. यू आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. और इसकी जो वैल्यू आई, जिस रेडियस पे ये आ रहा है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से, सेम चीज बोर्ड्स मॉडल में भी था. कैलकुलेशन वाइज एवरीथिंग comes out to be true. So this is why we say that this a naught, we give it as a represent this term as a naught, which is the Bohr's radius 52.9 picometer. So, 52.9 picometer, most probable radius. तो जहाँ पे maximum probability है to find the thing, find the electrons, that is called most probable radius. So probability of finding the electron in the incremental thin shell at a distance r, right? तो वो probability जब हमने calculate किया, that comes out to be maximum at some point. So अब समझ में आया s orbitals के बारे में story. S orbital has maximum electron density at the nucleus, but the probability the probability function as defined here is the electron density multiplied with the volume of the thin shell. The thin shell volume, the 4 pi r square term, goes to 0, and so probability of in that incremental thin shell is 0, right? But if you add the nucleus, there is substantial electron density, right? It has maximum. Okay. और प्रोबेबिलिटी के लिए बिकॉज दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे दोनों का सब्सटैंशियल वैल्यू होगा, एक कोई जीरो हो जाएगा तो पूरा प्रोबेबिलिटी टर्म आपका जीरो हो जा रहा है. दोनों एंड पे हो रहा है, एट द टू एक्सट्रीम्स, एट द न्यूक्लियस एंड वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. इन बोथ केसेस वन ऑफ द फंक्शंस is going to 0. In the first case, when you are at the nucleus, electron density is maximum, but the volume of the thin shell is 0, and that's why whole term goes to 0. At another extreme, far away from the nucleus, your 4 pi r square, the volume is large. 4 pi r square term is large. 4 pi r square with dr, the thickness multiplied with, so that term is very large, but the electron density is the blue line. See the blue line, it is electron density term is going to 0, approaching 0, and because of that, again the probability, the radial probability is approaching 0. It becomes 0. Somewhere in between you have maximum where both are finite. So what we have learned, the capital R is the wave function, radial wave function. When you square it, you get electron density. When you multiply further with 4 pi r square dr, ध्यान दीजिएगा सब लोग, हाँ, you get the, so all these terms, so you learn these three things. r square किया, फिर r square हुआ, that is electron density, and then probability. Okay, so what are these things? Radial wave function, variation in amplitude of the wave as a function of radial distance r. उसी को स्क्वायर किया to describe the variation of electron density as a function of r. तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है. और ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या है? वॉल्यूम ऑफ इंक्रीमेंटल थिन शेल thickness dr with thickness dr, right, at a distance r with thickness dr, उसका जो है सो मल्टीप्लाई किया. जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो यू आर मल्टीप्लाइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी into volume. You are doing this thing.
So electron density, volume of the thin shell, ये आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है? Probability. You are getting probability. So this is the probability that you have been. In general जो आप probability refer करते हैं ना, वो यही वाला होता है. 11th क्लास में जो बच्चों को बताया गया, PSC में बताया गया, वो यही वाली probability थी. और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बार बार कर रहे हैं स्क्वायर करने पे, इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट वर्सेस थिन शेल. कहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वेयर इज दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट वी आर डिफाइनिंग, it is probability of finding an electron in an incremental thin shell at a specific point. और ये वाला क्या था? At a specific point. So not to be confused, you remember that this is the electron density. Simple, I am keeping it simple. This gives you electron density multiplied with the volume of the thin shell, you get the probability. Simple, right? So we have considered electrons to be the atom is visualized as onion. Electrons are spread over a large area with varying electron densities, and then we are trying to locate the calculate the probability of finding electron in the thin shell. In thin shell में क्या probability है उसको हम find out करने की कोशिश कर रहे हैं, and that is what we define as probability. So now how the curves look like? We start with this. One is square, you get, so the profile remains unchanged. For 1s orbital, you look at this, only thing is that when it is 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, right? So the values have changed, but nature of curve remains same. Nothing much, not much difference. Only the values have changed. You see? Okay. स्क्वायर किया तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर से. So multiply with dr. 4 पाई आर स्क्वायर dr से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, which has a maximum. So now this is your 2s orbital. This is the actual calculated graph, and when you square it you get this thing. स्क्वायर करने पे जो मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है उसका वैल्यू आप देखिए बढ़ जा रहा है. यहाँ पे स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर जैसे वहाँ पे 4 हो गया था, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है. सो यू हैव मैक्सिमम हियर. देन अब आपने स्क्वायर किया तो नेगेटिव साइड में जो था स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पॉजिटिव. सो जो यहाँ पे नेगेटिव था एम्पलीट्यूड, वो नेगेटिव का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव होगा. तो ये आपको देखना. सो पोजीशन ऑफ द नोड विल रिमेन सेम. सी व्हेन यू आर ड्राइंग, when you are writing your answer sheet, take note of always don't change the point of the node. Node will remain at the same position. If you are drawing on the x-axis, the position of node has to be fixed first, then you draw it like this, showing that rest of the things. So electron density profile is generated here, right? How the electron density changes as you move away from the nucleus for 2s orbital, and then you multiply with what? 4 pi r square dr, and you get the probability. 2s orbital का probability diagram ऐसा, probability curve appears like this. So 4 pi r square multiply किया, and this is your most probable radius. So you are getting 2 maxima. So what you are getting here? The first curve, when you are plotting radial wave function versus radial distance, capital R versus this one, and this is the small r, that is the radius. So it tells you we are visualizing the electron as a 3-dimensional wave,
and that wave has maximum amplitude at which position, where it has the maximum amplitude of the wave is. So it is having maximum amplitude at the nucleus. That's what it tells you, the first graph. Okay, and how it varies as you move away from the nucleus, वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि वो पहले मैक्सिमम है, फिर घटने घटने लगता है, घटते घटते जीरो से पास किया, सो यू हैव अ नोड हियर एंड देन टर्न्स नेगेटिव, और उसके बाद फिर उल्टे साइड में जाके मैक्सिमम रीच कर गया और वहां से फिर एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है. इसी तरह से स्क्वायर किया तो आपको सेकंड पॉइंट, सेकंड ग्राफ से क्या मिला, आपको स्क्वायर किया है आपने, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गया. ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and then you multiplying the two things, you are getting the maximum probability, maximum radial probability is this point. So ये आपका most probable radius कहलाएगा. So we call it, where the probability is maximum, that radius is called most probable radius. Taking into account this हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम सिर्फ रेडियस नहीं लिखते, रेडियस वायर लाइक पाथ हम नहीं कह सकते. So we talk about most probable radius, which is similar thing as what Bohr has calculated, what he called as radius of an orbit. Okay, so the correct term is most probable radius. Maximum probability जहाँ पे आ रही है उसको most probable radius कहेंगे. ठीक है, radius. So if you are looking at the profile of 2p, जैसा कि हमने डिस्कस किया, functions appear like this. When you square it, again there is not such change in the only y-axis. The values on y-axis are changed. When you square it, then you multiply 4 pi r square and it generates like this. So you see one more thing, when you are multiplying, the peak position is now here. Most probable radius is somewhere shifted to the right. मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट जो है वो ध्यान से देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ये आपकी ड्राइंग में दिखना चाहिए जब आप ड्रॉ करेंगे, ये सब बेसिक फीचर्स आपको. सो नाउ वी आर समराइजिंग ऑल दिस थिंग्स ग्राफ. सो फर्स्ट वन फॉर वन एस ऑर्बिटल्स, ये क्या है, वाई एक्सिस पे कैपिटल आर, स्क्वायर किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल मिला, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने लोकेट किया एट द न्यूक्लियस, then you multiply by 4 pi r square and you get maximum radial probability, and at the value of the radius is most probable radius, right? It is the same thing which is the radius of that orbital. So for 1s orbital, this is the most probable radius. Then for 2s orbital, you see maximum amplitude, maximum electron density. So it is having a node, you see the zero line here, ये zero वाली line है, right? So it is turning negative on this side, so it has amplitude is turning negative here, and when you square it, it is showing a small, so maximum electron density here. And third, square it, most probable radius, right? So most probable radius is this one, 2p. Again, this is the profile, a simple zero amplitude at the nucleus, then rises to a maximum and then decreases. Okay, so the most probable radius here is like this, 2p, 2s, 2p. Okay, similarly what we have shown here, it is the exact calculated values. You can see y and x-axis very well calculated with picometer leveling of thing. तो प्रोफाइल आपको दिख रहा है, ये 3s 3p 3d का है, 3s 3p 3d r values, 3s 3p 3d. So what you are able to see here, 3s 3p 3d, number of nodes
3s 2 nodes, 3p 1 node, 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 1 node, and nothing. In 3D you don't have any nodes. And finally, when you convert into probability, when we multiply with 4 pi r square term, you can square it and then multiply it, you get this kind of plot. So I expect I'm leaving this as an exercise to you, so you do it by yourself. The middle one so अपनी कॉपी में इसको आप करके रखिएगा. 3s 3p 3d का एक प्रोफाइल जनरेट कीजिए. r square and r, then the probability. So we are trying to see the amplitude variation with radius. 1, that's the radial wave function, plot of radial wave function. 2, we are trying to see the electron density, how it varies with radial distance, that is the plot of r square, capital R square. 3, we again multiply this capital R square with 4 pi r square dr, that is the volume of the thin shell, and this gives me the probability. So 3 curves, एक ऑर्बिटल के लिए 3 कर्व का nature of the curve you should be able to predict. You should be able to predict the nature of the curve. You should be able to draw the rough sketch of these curves if asked. Okay, किसी भी ऑर्बिटल. ठीक है. अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये it's not very difficult when you so you can also see the nodes and 0 point. You also see. So most probable radius कहाँ पे है आपको दिख रहा है? Most probable radius is C, 3 points. Hmm. 3s 3p 3d. 3s 3p 3d. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं. What we are going to see here, what we actually seeing on the screen. देखिए इस पॉइंट पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोड है, नोड, नोड है ना, और उसके बीच में एक फाइनाइट, एक मैक्सिमम कर्व आ रहा है यहाँ पे. So this kind of thing we call it as subnodal maxima. These two are called, दो नोड के बीच में subnodal maxima. This is the maximum probability is here. Besides that, it drops to 0, and between these two there is a node here, there is another node here, and in between the two we see this plot, a maximum value. So this is a subnodal maximum. Two such points, curves are there, so these are subnodal maxima. आप समझ रहे हैं? Maximum and these are subnodal maxima. ये वाला नीचे वाला जो पॉइंट है, ये दोनों हमारा सबनोडल मैक्सिमा है. ओके, so most probable radius तो हमें निकल गया. So ये एक, the presence of subnodal maxima is very important when we discuss the energy of the orbitals in multi-electronic systems, right? So presence of subnodal maxima affects the energy. How and why, you will try to understand that later on. Okay,
और एक चीज आप देख रहे हैं, दूसरी चीज क्या नजर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल जिसको आप कहते हैं बोर्स मॉडल में, वो अब मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम है। वेरी सरप्राइजिंग, 3s, 3p और 3d. Radius of 3s, most probable radius for 3s is larger, 3p is slightly less, and 3d का और भी कम है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का ऑर्डर देखिए ध्यान से, राइट। हाइड्रोजन एटम में तो तीनों की एनर्जी बराबर है, बट जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाएंगे, एनर्जी ऑफ 3s विल बी लोअर देन 3p देन 3d। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, सब नोडल मैक्सिमा, और ये आगे चल के हम देखेंगे, वी विल डिस्कस दिस इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, व्हाई so the presence of subnodal maxima and this one. So here this is the maximum for, and this is my one subnodal. आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमा इज प्लूरल, मैक्सिमम इज सिंगुलर, समझ में, ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दो है, वन टू, टू such points, two mountain like curves having zero electron density on both sides, and this is in addition to the main one maximum that we have already seen. Okay, and such points are called subnodal maxima. There is one maximum and there are two subnodal maxima, and here in the case of 3p we have one subnodal maximum, subnodal maximum है ना, और इसमें just a maximum, no subnodal maximum probability at this point, and so you have most probable radius, and the most probable radius is decreasing, 3s, 3p, 3d, right? So मैं बहुत सारा से लिख दिया हूँ, इसको हटा देता हूँ, clean up. So now what we understand now is this most probable radius, and these are called subnodal maxima. So if we try to show you one thing, so what is this? This curve tells you this is a mapping of electron density. So this is basically it is the electron density which is plotted over here on y-axis. I told you probability at a point, probability at a point is electron density, right? Probability in thin shell is the that what we call as probability in general. When जो हम रेफर करते हैं, so ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये वही वाला पॉइंट है, ये ऊपर तक जाएगा ड्रॉ करके, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सटेंडिंग टू द टॉप दैट वी वर ट्राइंग टू शो, something like this. Okay, so maximum electron density at the nucleus, it is the square of capital R square है, right? So this is so this will, when you try to, so maximum electron density you show it by sorry, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो मैक्सिमम यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे सबसे, सो दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन, इट इज अ मैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ 3 डायमेंशन। तो उस स्फेरिकल पैटर्न जो इमर्ज करेगा उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। सो इट इज अ कलर कोडिंग, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा है वहां पे कलर बहुत डेंस, मैक्सिमम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी color will be very dark, color will become fade, color will start fading as the electron density decreases. So that's the drawing shows here. In case of 1s, there is, you have color at the center, very dark blue color, which fades away slowly,
and finally becomes white at the extreme, so at a very far away distance, at away from the nucleus. Secondly, this is your 2s. So electron density very high at the nucleus. You see the dark shade at the center, and then this dark shade is becoming is फेडिंग, लाइट होता जा रहा है और फाइनली बीच में वाइट हो गया. जहां पे वाइट हो गया वहां पे नोड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गया. और फिर से ये राइज करता हुआ दिख रहा है स्क्वायर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो उसके लिए फिर कलर कोडिंग देखिए, अगेन वाइट से ब्लू हो रहा है, ब्लू का शेड बढ़ा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम है, फिर से ड्रॉप करने लगा. ये कर्व देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है. सो दैट यू सी द कलर शेडिंग हियर, द वाइट. इसी तरह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैपिंग अगर आप करेंगे इन 3 डायमेंशन, इट जनरेट्स अ स्फीयर, अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स. सो एक शेल सेंटर वाला बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके बाद खाली है. सो द नोडल सरफेस रिप्रेजेंट्स अ शेल. बीच में जो व्हाइट वाला है उसको आप कनेक्ट करें 3 डायमेंशन में, इट विल फॉर्म अ शेल. सो द नोडल सरफेस इज अ स्फेरिकल शेल. ठीक है. सिमिलरली व्हेन यू आर लुकिंग एट 3s ऑर्बिटल, ध्यान से देखिए 3s ऑर्बिटल, center is very dark, very high, maximum electron density at the center. So the color, blue color is very is condensed, it is there very high, and then it fades, becomes 0 at some, when the electron density becomes 0, it's totally white, and then it starts rising. Color, you can see the blue color corresponding to this is coming back, and then it starts disappearing again. Then it becomes 0, है ना. वाइट हो गया, ये देखिए वाइट हो गया. उसके बाद फिर से हल्का 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 सा ब्लू का टिंज आया और फिर चला गया, डिसअपियर्स, वाइट पूरा हो जाता है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन mapping of electron density. The nodes, look at the nodes, white area. So it is at a certain distance from the nucleus, you have the white shells that represents in the picture, which represent nodal surface, and the nodal surface looks like a sphere, a spherical shell. ठीक है. So radial wave function gives you, okay, so that's thing. Where is it? So some points to just, so these are the points that already, s electron density maximum at the nucleus. At larger distance from the nucleus, the electron density falls off rapidly. You saw that nodal surface. 2s orbital also has a nodal surface with a 0 electron density. We saw that this is the nodal surface, white one, 0 electron density, and this is a sphere like thing, spherical shell at a distance of 2a naught, something like this, where the density is 0. Nodes appear naturally as a result of the wave nature of electron. So ये आपने देखा. We have also already defined what is atomic orbitals, discussed all these points, and then we have, so energy is given by this factor. I also told you the angular momentum of magnitude L into L plus 1 under root h cross. Okay, so that is your, and the z component of angular momentum is given by ml h cross, z component of the angular momentum. So we will be discussing this further. ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास. We continue from here.